Hello everyone and welcome back to my channel Biophily. For a quite a long time period, I'm seeing that people, especially at our workplace or maybe when we're at college or maybe in some school, so generally this problem arises that if you find a HIV patient, we generally try to stay away from that patient क्योंकि हमें ऐसा लगता है that is a contagious disease and it may spread from person to person. तो ये जो stigma है, this notion, this kind of misconception. So today I am here to make you aware about few of the things which will cover up different aspects of HIV. And I hope that if you watch this video from the beginning till the end, you will have an idea कि इसका जो आपका सोच है इस डिजीज़ के बारे में, this is absolutely wrong. And what is more important for an HIV positive patient is to interact with you, make them feel secure and make them feel that it is a part of their life. Currently we don't have any cure for that, but that doesn't mean that the world will end for them. So we need to be very polite and we need to talk to them instead of judging them, or we just stay away from them. So I'm Devrubha Samantha and welcome back to my channel here. So today we will discuss about AIDS, which is acquired immunodeficiency syndrome, and I believe is that this is a topic which we need to discuss it open on an open forum. So we know that World AIDS Day, it is celebrated internationally on 1st of December every year to make aware and make people acknowledge that this is okay. If a person is suffering from HIV positive, if a person is suffering from HIV, so that is not a big deal. Yeah, it's definitely a deal if we have to take some medications and few of the things we need to maintain, but it is not something that the world has completely ended for those people. So let's come and let's get started and know about more in details about AIDS. So see, when we talk about AIDS, the very first I think misconception arises that many people say HIV instead of AIDS. See, AIDS is the disease, okay? HIV is that particular virus causing AIDS. So when there are different stages of infection, okay? So like there can be acute phase, intermediate phase, there can be some chronic stage or phase. So HIV infection हुआ मतलब ये नहीं कि आपको AIDS हो गया. When it is the last stage, the very final stage, there may be chances the patient may also die even. वो stage को हम AIDS कहते हैं. वो हमारे बॉडी के जो immune system होते हैं, कुछ immune cells, अगर आपने मेरे immunology के lectures देखा होगा, so there are lots of immune cells, total immune system आपका collapse कर देते हैं. And rather it is very badly damaged. तो आपकी बॉडी, आपकी immunity जो है ना वो खराब हो जाता है, जिसके लिए your body can't fight against any kind of infection or disease. तो एक बार ये अगर हो जाए तो ये हम समझ चुके हैं कि कोई भी दूसरी बीमारी भी हमें हो सकता है, बिकॉज इम्यूनिटी अगर जो हमारी इम्यून सिस्टम है वही नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, सो दैट मीन्स the same, right? So basically in US, most people with HIV do not develop AIDS. Now this is a statement, appropriate correct statement taken from CDC report. इसका मतलब ये होता है कि जो आपने HIV जो पेशेंट्स डेवलप करते हैं, स्पेशली यूएस में रहने वाले, वो बहुत ही अपने बारे में like they are very they maintain hygiene, they are very much concerned about their health. तो जनरली HIV मेडिसिन या मेडिकेशंस के अगर प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस के अंदर आप एक अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, दैट मीन्स द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज विल रिड्यूस, और इनहिबिशन भी हो सकता है उस डिजीज का फैलने से आप रोक सकते हो इस बीमारी को इन योर बॉडी इवन. So next we'll be discussing about a few more thing, that is how we will understand a person having AIDS, और आप जो रिपोर्ट जब टेस्ट वगैरह करवाने जाते हो, then how can you understand that the person is suffering from AIDS? See, the very first is that your CD4 cells. Now, जिनको पता नहीं है बिल्कुल भी आपका CD4 cells क्या है, you need to watch my immunology lecture first. And थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देती हूँ. इम्यून सेल्स है, राइट? आपके बॉडी के जो इम्यूनिटी है दो प्रकार के, इनेट और एडेप्टिव होते हैं. इनेट होते हैं बचपन से हम जब पैदा होते हैं, कुछ बेसिक टाइप की इम्यूनिटी आपके अंदर रहता ही है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं. एक होता है एडेप्टिव, विथ टाइम इट ग्रेजुअली डेवलप्स विद इन अ पर्सन. जैसे कि आपको एक बार इन्फेक्शन हुआ, फिर वो इन्फेक्शन दोबारा, ताकि अगर हो भी जाए आपको तो your body automatically can be able to generate antibodies. That kind is called adaptive. So from the very name you can understand innate and adaptive. And CD4 cell एक टाइप के adaptive immune cells आप कह सकते हो, जो एक इंसान की इन्फेक्शन की प्रायर एक मेमोरी होना ज़रूरी है तो ही ये आगे काम कर सकते हैं. ओके, तो जो CD4 सेल्स है ना, ये इसका नंबर अगर 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर के ब्लड में अगर इससे कम पड़ जाते, लाइक बिलो 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, तो आप समझ रहे हो कि आपको HIV हुआ है, बिकॉज दैट इज द मिनिमम काउंट ऑफ सेल्स यू नीड टू हैव इन ऑर्डर टू फाइट सच काइंड ऑफ इन्फेक्शन. सो इस CD4 के सेल्स के काउंट के हिसाब से वी कैन अंडरस्टैंड इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम AIDS और नॉट. दे डेवलप वन और मोर ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस रिगार्डलेस ऑफ देयर CD4 काउंट, प्रोवाइडेड दैट नीड्स टू बी नोटेड.
after that, this is a basic diagrammatic representation of an HIV virus. How it looks like see HLA class 1, class 2. This is something we'll discuss in a different separate video. Maybe this will not be able to cover up because there are a lot many things we need to discuss here. More or less you need to understand this is a single stranded RNA kind of virus, RNA stranded virus. So इसके through ही आपका infection फैलता है. That is a person suffering from AIDS just because of the infection by HIV, that is human immunodeficiency virus. Okay, so coming to this section, I thought of presenting this as well, that one of the most common problems, at the very beginning I told you, like people mistakenly say like I am suffering from HIV or I am suffering from AIDS. Now which one is the right one? See, HIV is the virus. I already told you it is that virus which is going to attack those cells which are capable of fighting against any kind of disease. That means those immune cells. Immune cells में जो भी आपका मतलब डैमेज हो जाते हैं उस वायरस के दौरान, ये आपके HIV करते हैं, मेकिंग दैट पर्सन मोर वल्नरेबल टू अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस. बट एड्स एक बीमारी है. अगर HIV को आप ट्रीट नहीं कर पाए, आप कोई मेडिसिन नहीं ले पाए, आपका डायग्नोसिस नहीं हो पाया, आप समझ ही नहीं पाए कि आपको HIV हुआ है या एड्स हुआ है, तो एड्स हो जाते हैं, मतलब लास्ट स्टेज होते हैं, आपको समझ ही नहीं आया होगा. तो HIV फैलता कैसे? फैलता होगा कुछ भी बॉडली फ्लूइड्स. आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज ऑल्सो अनप्रोटेक्टेड सेक्स. अगर आप कर रहे हो किसी के साथ विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शनल बैरियर, तो ये फैलना मतलब अनिवार्य है. यू कांट जस्ट अवॉइड दैट. यू डोंट नो ना द अदर पर्सन इज हैविंग HIV और नॉट. वी डोंट नो दैट. सो जनरली अनप्रोटेक्टेड सेक्स रिजल्ट इन HIV इवन थ्रू इंजेक्शन. लाइक आप इंजेक्शन शेयर करते हो, कहीं जगह पे ब्लड डोनेशन कैम्प में बोला तो जाता है कि आप एकदम स्टेराइल, एकदम मतलब प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके उसकी स्टेरिलाइज करके तभी यूज करें. बट देयर आर मेनी एरियाज आई हैव सीन शेयरिंग इंजेक्शन ड्रग इक्विपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पिक्चर. तो आपको नहीं पता होगा, आपको ये कहा जा रहा है फ्रेश है, बट हो सकता है क्या पता, वी डोंट नो ना व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द history of that particular that injection. So due to the infection caused by HIV virus, AIDS occur in a healthy individual. मैं भी healthy हूँ, we all are healthy, but कब किसका हो जाए, this is an like internal system. तो इसलिए you need to be updated, and I especially believe that before getting involved in a future or for long term relationship, it is always better कि आप सबसे पहले चेक कर लीजिए आप HIV पॉजिटिव है कि नहीं. That is going to determine your future as well as the upcoming generation as well. So that is, I think, more important rather than kundli match karna, which is a most traditional and that is the old fashioned one. So because science has very much advanced and we need to understand the importance of our future generation, what we are passing on is the most important thing currently where we are standing right now. See, how to know whether a person is HIV positive or not? Of course, we need to be tested. Without taste, because there are some few symptoms जो देखकर आपको लग सकता है आपको HIV हुआ है. आप पता कैसे लगोगे सही से कि आप पॉजिटिव हो कि नहीं? Only way is that you have to go a test, जो ELISA test है, you have to do the testing, and I think that is very important. सो जितने भी टाइप के टेस्ट होते हैं, एलाइजा के बारे में कहा, नैट विच इज़ न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, तो उससे आपका ये पता लग सकता है. और यू हैव टू गो थ्रू, यू जस्ट कैन रिलाई ऑन द काइंड ऑफ सिम्टम्स विच आर टेलिंग वेदर यू आर HIV पॉजिटिव और नॉट. तो जनरली आपको मैंने यहाँ पे कुछ टेबल्स में फिगर आउट कर दिया HIV पॉजिटिव पेशेंट का कैसे होता है जनरली सिम्टम्स, HIV नेगेटिव और फॉर अ प्रेग्नेंट वीमेन. आई थिंक ये सब दो आप खुद ही यहाँ से पढ़ सकते हो, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई नीड टू हाईलाइट फॉर अ प्रेग्नेंट मदर, वो सबसे ज़रूरी आई थिंक इन दोनों में से कि अगर आप पॉजिटिव टेस्ट कर जाते हो आपके टेस्टिंग के बाद, तो सबसे ज़रूरी है यू हैव टू टेक अ मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब थ्रू अ फिजिशियन. और प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान ये आपके HIV मेडिसिन आपको देना बहुत ज़रूरी है विद इन 4 to 6 months आफ्टर गिविंग बर्थ. बिकॉज इससे क्या होता है, आपका जो HIV ट्रांसमिशन का जो चांस है अपने बच्चे पर, वो 1% से भी कम हो जाते हैं. सो HIV मेडिसिन विल प्रोटेक्ट योर हेल्थ एज वेल एंड ऑल्सो द हेल्थ ऑफ योर बेबी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और HIV पॉजिटिव हुआ तो ऑफकोर्स यू हैव टू बी वेरी वेरी मच अलर्ट कि कब कौन सी मेडिसिन लेनी है, कब क्या करना है. सबसे ज़रूरी है जो थेरेपी आजकल बहुत ट्रेंड में है, दैट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART इज ऑल्सो नोन एज इन शॉर्ट, एंड इट विल गिव यू एन अनडिटेक्टेबल वायरल काउंट. आपके वायरल लोड जिसको कहते हैं वो भी बहुत कम दिखेगा. अगर आप नेक्स्ट टाइम टेस्ट करवाना चाहते हो, इट विल बी नथिंग, आपका ऑलमोस्ट जीरो, एंड इट विल गिव यू अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल, एंड यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसमिट दैट HIV टू अदर HIV नेगेटिव पार्टनर्स through the time of intercourse. So what are the preventive measures that
I think you need to take if you are an HIV or AIDS positive. So first is that, of course, the antiretroviral therapy is a must you need to take if you have a HIV positive for yourself and also for the other community who are HIV negative. Second thing is that if it is prescribed, then HIV medicine will definitely help you to reduce the HIV count in your blood. तो HIV के अगर जो काउंट है, वायरल लोड है, ये इसको वायरल लोड कहते हैं, ये काउंट कम हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज वायरल सप्रेशन. ये हमेशा के लिए आपकी बॉडी से चला जाएगा. दिस इज नॉट थिंग. इसका लोड कम हो जाएगा और चांसेस भी कम हो जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स ये ट्रांसमिट हो जाएगा किसी और पर्सन में, ये भी कम हो जाएगा. सेकंड थिंग, थर्ड इज दैट इफ अ पर्सन वायरल लोड इज सो लो दैट द स्टैंडर्ड लैब कैन नॉट डिटेक्ट इट, दिस इज कॉल्ड एज हैविंग एन अनडिटेक्टेबल वायरल लोड. सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे. एंड जनरली पीपल विद ऑफ कोर्स विद HIV नीड टू हैव अ प्रेस्क्राइब मेडिसिन इन प्रॉपर डोज फॉर्म. और भी कुछ है जहाँ से आप ये HIV को रोक सकते हो या रादर देन प्रिवेंट कर सकते हो, इज दैट HIV थ्रू सेक्स और ड्रग यूज इंक्लूडिंग प्री एक्सपोजर ऑफ prophylaxis. So this is a term which will be defined in immunology with a separate lecture. This is very vast. ये प्रोसेस के दौरान हम इसके प्रिवेंट कर सकते हैं HIV को, मेडिसिन ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो थ्रू पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. ये आपको सेक्स या फिर ड्रग यूज़ के पहले आप इस थेरेपी ये जो ट्रीटमेंट है यूज़ कर सकते हो या फिर आफ्टर द सेक्स और ड्रग यूज़. एंड HIV मेडिसिन टेकन विद इन 72 hours आफ्टर अ पॉसिबल एक्सपोजर टू प्रिवेंट दैट द वायरस फ्रॉम बी टेकिंग होल्ड. सो दिस इज़ व्हाट द मेजर सिम्टम्स ऑफ एड्स. तो ये जो आपके आँखों पे, आपके ओवरऑल बॉडी में, लंग्स में, स्किन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, मतलब हर जगह से आप इफेक्टेड रहोगे बिकॉज आपकी बॉडी इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा कि वो हर टाइप की बीमारी से लड़ सके बिकॉज योर इम्यून सिस्टम गेट्स वीकेंड, राइट. सो फॉर दैट वी हैव टू बी कॉशियस वेरी मच. So here I have come across the top HIV hospitals in India, like see Andhra Hospital, Jammu Hospital, HCG multi-speciality hospitality hospital, then Dispur Hospital, Apollo Clinic, Apollo, I think it is present all over India. Okay, and like I have clubbed all those hospitals which are best from different parts of India, from north till west, east and south. So highlighting these I found is that from recommended website and Med Clinic, these are the hospitals which will provide you a better HIV treatment at a more or less nominal cost, like budget friendly. Of course, I'm again telling you, HIV treatment and HIV, those kind of medications, it will be definitely expensive. But among the high range and expensive kind of facility, I think these hospitals you can definitely look for getting HIV kind of medicines. So how much does this HIV treatment cost? I think this is a very important question I need to focus. People with HIV can live healthier longer rather than those who are not taking any kind of medicines or therapy, right? So of course the treatments are expensive, as I told you. Yeah, the antiretroviral this therapy has been very newly introduced and this is quite expensive. But in those provided hospitals, they will definitely be giving you some offers, maybe some discount also will get that. And if you have some insurance and health policies, that will definitely help you to suppress that. Okay, generally on an average, on a study, it has been estimated that this will take you like $1,800 to $4,500 per month during a person's lifetime. And of course, this is a costly and lucrative process. The cost is more than most people can afford on their own. Yeah, this is definitely a fact. But of course, when you're suffering, when we know that disease is something before that, I think it is always better to have prevention. Prevention is always better than cure, right? And when we don't have a cure for this kind of diseases, of course, you have to be very cautious about yourself. So, like, see, we are basically focused upon, like, we are here to make you promote and aware about HIV. You can head the disease, but yeah, you can't head the one who is suffering from HIV, right? So our main focus is to spread awareness among the people and not ignorance. So if you find any patient who is HIV positive, so rather than उनसे दूर रहने से उनको अपना दोस्त बनाइए, उससे बातचीत करिए, उसके प्रॉब्लम्स को समझिए. So I know that we can't provide them the solution, we cannot even provide them the better life, but yeah, ताकि वो अलग ना समझे, उसको और ज़्यादा mentally stress ना feel हो, we are responsible for that. So it is not about the disease of that particular individual, but it is the disease to be concerned, to be think all across the world. So today I end this lecture here itself. So if you like this video, definitely give a like and definitely share this video. I think this is an awareness video and I think that you need to share it to your friends, maybe your family members, to know them more. Because ये जो है ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, I think कहीं जगह पे AIDS या HIV पॉजिटिव पेशेंट सुन कर हमारे पहले सबसे पहले ये सोचाते, oh my god, I need to stay away because क्या पता मुझे भी हो जाए. But this stigma, this kind of thought we need to change, because जब दुनिया चेंज हो रही है तो दुनिया चेंज तो तभी शुरू होगा जब हमारा सोच चेंज हो. So thank you so much and I'm ending this video right here. Till the time, stay tuned, stay safe. और हमारा वीडियो का मोटिव यही रहता है कि आप अवेयर रहिए और दूसरों को भी अवेयर करिए.
So thank you so much, and definitely do like, share and subscribe my channel for getting the latest updates. Thank you so much.